हाय गुड मॉर्निंग। सो आज है 10 मार्च 2021 और आज आपण जा रहे हैं विसरलंय समजलं असेल की आम्ही कोकणात चाललो आहे आज. ॲक्टिवा तर आहेच रेडी ॲज ऑलवेज. रूट असं राहील की इथून पुणे, पुणे कोल्हापूर, कोल्हापूर तारकर्ली. इथे पूर्ण वॉटर स्पोर्ट्स वगैरे खेळायचं खूप प्लॅनिंग आहे. सो तिथे होमस्टे वगैरह हमें बुक केलेलं ऑलरेडी. एंड अभी फ़िलहाल टेम्परेचर भी बहुत हाई है. इट्स रफली अराउंड 40 डिग्री टेम्परेचर. तो वो भी एक चैलेंजिंग टास्क होने वाला है. सो वी हैव गॉट अवर इलेक्ट्रोलाइट पैकेट्स, वाटर बॉटल्स. जब आप छोटे थे छोटी छोटी चड्डी पहना करते थे, बड़ी शरारत करते थे. अभी आप लेमनेट के चॉकलेट्स भी खाते थे. सो लेमनेट के चॉकलेट्स भी लिए. एंड निकलने का प्लानिंग था 5:30 का, बट अभी बज रहे हैं 6:40. सो वी आर रनिंग ऑलमोस्ट 1 आवर लेट. हो जाता है, अभी क्या करें. इंसान है, इंसान से गलती नहीं होगी तो किससे होगी. ये अराउंड 3 डेज़ का प्लानिंग है अपना. एक दिन जाने के लिए अराउंड 550 किलोमीटर से, एक दिन फुल डे उधर एंजॉय करने का है एंड एक दिन रिटर्न आने का है. सो बाय गॉड्स ग्रेस एकदम नसीब से हम लोग की छुट्टी भी सैंक्शन हो गई है. तो एक मिनी वेकेशन तो बनता है ना बॉस. एज ऑलवेज अपने साथ अपनी पिलोन राइडर रहेगी, अपनी बहना. सामान रखने का बहुत बड़ा टास्क रहने वाला है. सैडल बैग्स लेने वाले थे बट नहीं लिया बिकॉज वो एक्टिव ऑलरेडी बल्कि है, तो और तकलीफ़ हो सकता है उसको. तो जजमेंट में कभी कभार हो जाता है ट्रैफिक में वगैरह निकालने के लिए. सो लेट्स सी, आगे है फुट स्पेस तो उसमें ही पूरा कवर करने का ट्राई करेंगे. सो अभी बज रहे हैं 6:52. वी आर लिविंग फ्रॉम डोंबिवली. जय माता दी. सो वी आर गोइंग फ्रॉम शिलफाटा, पनवेल, पुणे. और अभी हम लोग हैं कटाई नाका पे. आज फॉग तो बहुत बढ़िया है. लेट्स सी आगे क्या टेम्परेचर रहता है. अभी फ़िलहाल तो मस्त है. रास्ते क्या पता ज़िंदगी में कभी होंगे भी नहीं आने. लोग अभी सिलफाटा पहुँचे. इधर से लेफ़्ट लेंगे और पुणे. जैसे लेफ़्ट से पनवेल होके सीधा वी विल गो टू पुणे. इधर से लेफ़्ट मारेंगे तो पुणे आएगा सीधा. ये देखो साइन बोर्ड देखने का, जाने का. पुणे इज़ 117 किलोमीटर्स, गोवा 556. तो हम लोग ऑलमोस्ट गोवा ही जाने वाले आज. इट्स लाइक नेक्स्ट टू गोवा. स्ट्रेट रोड ओल्ड एक्सप्रेस हाईवे से पुणे.
अभी नाश्ता बिस्टा हो गया है, इधर होटल प्रगति है एंड टाइम टू चेंज द राइडर. सो CJ राइड्स अभी विल बी पिलियन एंड राइडर विल बी MJ राइडर. And as always we are at Engineers Cafe Pune and as always my friend Amrish is here. ये every time मिलने को आता है जब भी मैं ये रोड से पास होता हूँ and आज का भी मेरा राइड के लिए he came all the way from his home around 10-15 kilometers and just to meet me. As always, I generally used to meet the riders who are passing by Pune, so yeah, that's what I do. That's a brotherhood or gesture, I would say. It's from my side. A rider's good gesture. Rider's good gesture. So that's what I'm doing it towards the riding brotherhood, the Chinmay. That's nothing else. There is nothing extra, nothing else. Rocket science that I'm doing it for anyone. Going beyond the ways and beyond the limits or something like that. Nothing like that. Yeah, but yeah, you do a good job. Yeah. Have a safe ride. Enjoy your ride. Bye bye. Thanks for coming. Yeah. Bye bye. तो अभी अमरीश से मिलके तो हो गया. नाउ वी विल कंटिन्यू आवर राइड.
काय करायचं? जेवायचं, नाश्ता करायचं, चहा करायचं, काय करायचं? जेवायचं. जेवायचं. हाँ. ठीक आहे. है तो हम लोग अभी ना कोल्हापुर पहुंचे एंड इधर हम लोग का एक बहुत ओल्ड फ्रेंड मिलने को है हम लोग को, सुहास पाटिल. he is an like very generous guy. मतलब जो भी राइडर्स वगैरह आते हैं ना इधर तो उनको ये मिलते ही मिलते हैं. मतलब बहुत अच्छा गेस्टर्स, गुड गेस्टर्स, हेल्पिंग नेचर. एंड इनका खुद का डोमिनोर है. ये डोमिनोर पे लद्दाख वगैरह किया एंड वापस जून में इज प्लानिंग टू डू लद्दाख एंड ईस्ट इंडिया, स्पीति वैली, ईस्ट इंडिया. सो हम लोग ने इधर खाना वगैरह खाया अभी. दादा थँक्यू सो मच येण्यासाठी. थँक्यू. आणि असं सगळ्या रायडर्सला मदत करत राहा. 100%. चलिए तो आगे मिलते हैं. अभी रास्ता रहेगा तारकर्ली की तरफ. अंधेरा होने के पहले पहुंचने का टारगेट है. लेट्स सी. ये लेफ्ट में रंकाड़ा लेक है कोल्हापुर का. इन शॉर्ट ना कोल्हापुर का मरीन ड्राइव है. मस्त है. और ये जो स्ट्रेट रोड बैकवर्ड जाएंगे ना तो बस स्टैंड आएगा, रंकाड़ा बस स्टॉप. और उसके जस्ट बाजू में अंबाबाईचं मंदिर आहे. कोल्हापुर का अंबाबाई का मंदिर. ये देखिए रंकाड़ा लेक. तो इधर ना हम लोग का एक सब्सक्राइबर फ्रेंड मिलने को आया है. उसको पता चला हम लोग इधर है तो ही केम जस्ट टू मीट. नाउ ही इज गाइडिंग अस टू द होटल. सो हम लोग ऑलमोस्ट स्टे के एरिया में पहुंच गए एंड दिस फेलो इज रियली काइंड हार्टेड मैन. 10-12 किलोमीटर ये बंदा मेरे को छोड़ने के लिए आ रहा है मेरे होटल तक. फिर ये 10-12 किलोमीटर वापस जाएगा उसके घर तक. लाइक पेट्रोल इतना महंगा है फिर भी वो बंदा इतना सब कर रहा है. आई एम लाइक ओवरवेल्म. सच्ची में आई एम सो हैप्पी दैट ऐसे भी लोग हैं. सो मच ऑफ हेल्प.